Age 18, hands up. 18 or 18 above. Then सिर्फ 18. 18 hands up. 19, 20, 21. 22, 23. Anybody 24, 25? Okay, good. So I got my age bracket. I got 18 and 18 up to 24. Okay. None of you are parents yet? None of you are parents? कोई भी आपके parents नहीं? बच्चों में था, students की बात करें, staff of course हैं, लेकिन वो फिर 18 से भी above हैं, 25 से भी above. Okay. So जैसे कि सर बताएंगे मेरे काम है no one taught me this. Okay. Now I am a certified life coach and I have 3 children. Alhamdulillah. Ages सबसे छोटी वाली 13 की है, मिडिल वाली 15 की है और जो सबसे बड़ा बेटा है वो 17 years का है. इसका मतलब है कि 17 years से माँ बनने की शर्त है और मुझे उनके साथ मतलब कि challenges of motherhood मैंने जिए हैं, मुझे समझ है. I think youth is an absolute fantastic, most beautiful phase of your life. It is a very confusing phase as well. अच्छा हाँ एक और चीज़ side track. अगर मेरी उर्दू में अंग्रेजी ज़्यादा हो जाए तो माफ करना. I hope nobody minds that. And if you do, please forgive me for that. ठीक है? Okay. मैं अक्सर ये कहती हूँ कि बड़ी एज में आते आते तक, which is like 40s and above, right? 30s is still youthful. I think 40s is youthful because now I'm in my 40s, so I think 40s is youthful. I'm not going to say I'm old yet. But by that time, energy or passion or जो आपका एक resilience or perseverance and जज्बा होता है ना, वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है. आपको लाइफ के झटके भी होते हैं. लेकिन जो आप लोग की एज है, you dream big, you hope big, you make dua big. Of course, you get more challenges. Of course, तजके ज़रा ज़्यादा जोर के लगते हैं. लेकिन you know, you just keep going. I think मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने खूबसूरत बनाया कि यूथ में जो हमारे पास दुनिया जहान की एनर्जी और बेवकूफ़ी करने के तमाम जज्बा होता है, ठीक है, या समझदारी से चलने का जज्बा होता है, हमें विजडम नहीं होता. और जब तक हमें विजडम आता है, यूजुअली लाइफ के चैलेंजेस को सह के हमारा जज्बा कम पड़ जाता है, राइट? अब इसको मेरे यूथ और मैं यूथ को कोच करती हूँ. मैंने जैसे सर ने बताया कि आई कोच यूथ, आई गिव देम सर्टिफिकेशंस. और मैंने ये सीखा अपनी लाइफ से और ड्यूरिंग माय पेरेंटिंग जर्नी या ड्यूरिंग माय एंड आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एज वेल. तो मेरा जर्नी यही से शुरू हुई थी. पहले मैं आई वाज अ टीचर, आई सर्टिफाइड एज अ टीचर एंड देन आई बिकेम अ लाइफ कोच. तो मैंने ये समझा है और मेरी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये है कि अल्लाह हम सबको, जैसे कि इस फाउंडेशन के जो मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनको ये था कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलो. मेरा भी यही है कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलो. यू शुड बी नो यानी कि सेपरेशन एंड बिटवीन देम. हर मुश्किल, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, फिजिक्स की हो, बायोलॉजी की हो, साइकियाट्री की हो, जो भी हो, उसमें वो दुआ किससे करते हो? रब से करते हो. नमाज में 5 वक्त खड़े हो तो किससे मांगते हो? रब से मांगते हो. आयतें पढ़ते हो, किसकी पढ़ते हो? कुरान की पढ़ते हो. कुरान किसके होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की. रब को समझना इंतहाई ज़रूरी है और फिर उसके बाद अपनी ज़ात को समझना बहुत ज़रूरी है. मेरा पूरा जो फोकस है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को समझते हुए, कुरान और सुन्नत को समझते हुए इंसानी साइकोलॉजी को समझो, अपनी ज़ात को समझो. हमारा डिवाइड ये है कि या हम एक चीज़ समझ लेते हैं या हम दूसरी चीज़ समझ लेते हैं. या मैं खुद अपना खुदा हूँ, मैं अपने गिर्द तवाफ करूँगा लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गिर्द तवाफ करते हुए ये भूल जाऊँगा कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया और इंसान क्या है? Weak है. We are supposed to make blunders, we are supposed to make mistakes, we are supposed to fall and then get up. अगर हमें फॉल की लचक ना होती, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ऐसा ना बनाया होता तो हम फरिश्ते होते, राइट और रॉन्ग? अगर हम में ये एबिलिटी होती ही ना कि हम पहले गिरें, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें, हमसे गलती हो, हम गलती से सीखें, जानें, अपने आप में शर्मिंदा हो, किसी से माफी मांगे, तो हम क्या होते हैं? फरिश्ते होते हैं. और हम फरिश्ते नहीं हैं. और हम फरिश्ते नहीं हैं. और हम फरिश्ते बनने का चैलेंज भी नहीं है. अल्लाह ने ये नहीं कहा था मैं तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि तुम फरिश्ते बन जाओ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था मैं दुनिया में इसलिए भेजा ताकि तुम ऊंचा बोलो, मेरी इबादत करो और तौबा करो और
फरिश्तों से भी अफजल हो जाओ। कैसे? तज़किया नफ्स से। तज़किया नफ्स से, राइट? हमारे नफ्स के साथ जो जुड़ी चीजें वो हैं, वो हमेशा रहेंगी। दैट इज द प्रोसेस। जिंदगी ऑफ एहसान, एक एहसान की जिंदगी गुजारो, एक्सीलेंस करने की कोशिश करना। ये कौन डिसाइड करेगा कि लेवल बी पे मैं एक्सीलेंट हो गई और लेवल सी पे मैं एक्सीलेंट से 1 पॉइंट कम? कौन डिसाइड कर रहा है? कोई नहीं डिसाइड कर रहा। नोबडी कैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज़, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज़ आवर स्ट्रगल्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज़ कि हमारी कोशिश क्या है। रोज जब होते हैं, रोज जब रात को सोते हैं, तो पूरे दिन की जो हमारी स्ट्रगल है, हमारे दिल के जो वसवास है, हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, वो सब उन सब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाकिफ है। मैंने ये बुक पेरेंट्स के लिए लिखी है, लेकिन मैं कपल्स को भी कोच करती हूँ, लड़के और लड़कियों को कोच करती हूँ। मैं कहती हूँ यूज द, आई मीन मेन एंड वुमेन बोथ, राइट? उसकी वजह यह है कि मेन एंड वुमेन बोथ मिलकर ही घराना बनाते हैं ना। अकेली खतून तो नहीं शादी कर लेती है और बच्चे पैदा कर लेती है। मैं अकेला बैठ गया और कहता हूँ कि फाइनली व्हाट, आज मेरी शादी मुबारक, एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू लिव विद माय सेल्फ फॉरएवर एंड एवर। ऐसा होता है क्या? तो मुझे सीरियस क्यों मस्ती करता हूँ? ये बात तो सरकाज़म था, रोज बराबर वेरी सीरियस टू मैन। ओके, in this book I talk about emotional resilience. Emotional resilience, अच्छा मैं सवाल को भी जवाब देना। जिसमें नहीं कोई जवाब होगा ना वो गलत नहीं होगा, कोई पर्सपेक्टिव से होगा, क्योंकि हर सवाल का कोई एक जवाब नहीं होगा। सवाल का पर्सपेक्टिव आपको जो समझ आया, आप उसी हिसाब से जवाब दोगे। There is no one answer except for Tawheed, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। That is the only. उसके अलावा दुनिया की जितनी बातें हैं ना, उसके कई पर्सपेक्टिव्स से आंसर हो सकते हैं, राइट? It is upon your belief system, it is upon your world view. बात यहाँ तक ठीक है? आज मैं जो आधे घंटे में जो बात करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को स्किल सिखाना चाहती हूँ। बोलने का कोई फायदा नहीं है, उनको सिखा के नहीं है। और सिखाया वाले जो है वो हो सकता है पहले से आता हो, शायद उसकी सिर्फ रिविजन हो जाए, लेकिन उसको कहते हैं इमोशनल रिजिलियंस। क्या कहते हैं उसको? क्या समझ आता है? जल्दी जल्दी पूछूंगा। आज के पास माइक्रोफोन नहीं भी होगा तो मेरे और सवाल ये ठीक है। इमोशनल रिजिलियंस क्या है? जल्दी जल्दी जवाब, ग्रुप में जवाब देते हैं। इमोशंस पे करो, आप एक इमोशंस की वजह से आप लाइक ना सही से काम इमोशंस की वजह से आप लाइक यूज ना करो और अपनी सही से लेके चलो डिस्पाइट के इमोशंस द बैलेंस को वेरी गुड। इंटेलेक्ट यूज ना करो, गुड। आप पर कोई काम अगर करना भी चाहो तो इमोशंस रिलीज करें आप और ना करने के इमोशंस की वजह से लाइक ये ठीक है? दिस इज गुड। श्योर नहीं होगा। गुड। एनीबॉडी एल्स? इमोशनल रिजिलियंस जो मैंने कहा उससे एग्री करते हो? नहीं? वेरी गुड, शाबाश। ओके, just say it. इमोशनल रिजिलियंस वही चीज है कि मतलब कि आपको आपके इमोशंस से इमोशंस की समझ आती है। कंट्रोल का वर्ड यूज है। मुझे कंट्रोल का मतलब थोड़ा सा लगता है कि अगर पहले किसी चीज से समझ में पहले से आप कंट्रोल करते हो तो इसका मतलब है यू हैव टू गो अगेंस्ट समथिंग, राइट? और हमारा जो फियर होता है यहीं से शुरू हो जाता है। मैं तुम्हें कहूँ कि क्या कहूँ कि यहाँ तक चलो और फिर यहाँ नहीं जाना, ठीक है? सुनो, मैं डायरेक्शन दी, 3 स्टेप्स आगे चलो और फिर राइट नहीं मुड़ना। दिमाग रजिस्टर पहले क्या करता है? राइट नहीं मुड़ना। जो 3 स्टेप्स चलो सुना आपने? सुना, लेकिन जो पहले दिमाग में वो नहीं करने वाले काम पे पहले चला जाता है। वजह क्या है? हम नेगेटिविटी की तरफ बायस्ड हैं नेचुरली। एक्सेलेंट। हम नेगेटिविटी की तरफ या ना करने की तरफ बायस्ड हैं नेचुरली। इसको हम स्पिरिचुअली जब हम रिलीजियोसिटी में लेकर आते हैं तो हम सवाल में बुला पहले किसकी बात करते हैं? जहन्नम या जन्नत, पहले किसकी बात करते हैं? कुरान की बात करो, तन की बात करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे बात की मूसा अलैहिस्सलाम से? अच्छे से बात की और रब खुद कितने नरमी से रब ने बात की, राइट? और ये आया कुरान में है कि और मूसा जब उससे बात करो तो ठहर के करना, नरमी से करना। अब फिरौन, दुनिया में जितने फिरौन गुजरे हैं ना उनका हेड है, क्योंकि वो कुरान में है। इसका मतलब है आई मीन ही वुड हैव बीन
passing. Even what's happening right now by the Zionists that they're doing worse than that. ठीक है? तो फिरऔन के लिए भी अल्लाह ने कहा जब उससे बात करो तो मंडी से बात करो. Okay. मेरा क्वेश्चन ये है जब आप अपने पेरेंट्स से अपने siblings, because this is a daily use, so I'm just going to turn the tables now, right? Okay. So आप अपने पेरेंट्स से जो इमोशनली चार्ज होते हो, आपकी बात हक भी हो, आपसे नरमी से बात होती है नहीं, वजह क्या? और वो होता क्या है? यूजुअली आप किस माइंडसेट से बात कर रहे होते हो? हम गुस्सा क्यों करते हैं? यार मेरी बातों का जवाब तो सारे तो ऐसा नहीं है कि दो-तीन लोग ये कोई तुम लोगों से इरिटेटिंग होने वाला. ठीक है, बी पार्टिसिपेट. वेरी गुड. सो हम इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि जब हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे किसी बड़े के साथ, हमारे टीचर के साथ, हमारे बहन भाई स्पेशली घर से मिलने खाते हैं तो बहन भाई के साथ जब हमारा कुछ झगड़ा हो रहा होता है, जब हम उनको कोई चीज समझाना चाह रहे होते हैं या वो हमें कोई चीज समझाना चाह रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं. नेगेटिव पर्सपेक्टिव में अच्छा कुछ जुमले फेंको अपनी तरफ, ठीक है, जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं. प्लीज तुम क्या हो? तुम हमेशा से तुम ऐसी ही हो, तुम हमेशा से मेरे साथ जबरदस्ती करते हो, तुम मेरे बारे में अच्छे महसूस नहीं करते, और तुम बदतमीज हो. और यार आप लोग अपने भाई बहन से कोई लड़ाई नहीं होती, आप लोगों की इस साइड की कोई नहीं होती. तुम शुरू से ऐसे हो. फैंटास्टिक. ये बहन भाई पर एक बहुत सेट है. तुम शुरू से ऐसे हो, बचपन से, टॉडलरहुड से, बचपन से जब से तुम जीने मिले, जब से तुम एक्चुअली दुनिया में आए ही क्योंकि आने की कोई जरूरत नहीं थी. ठीक है, यूजुअली हमारा बहन भाइयों के साथ जब झगड़ा हो रहा होता है तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. We have a bias since the very beginning of understanding it exists करता है या मैं exist करती हूँ, right or wrong? अब ये नहीं कह रही हम लगता है लेकिन वो ले लें हमारी कोई चीज़ हमारी तरफ से है, लगा ले अपना चार्जर, हमारा चार्जर लगा ले अपने फोन को, ठीक है. तो what is happening is again मैंने क्या recognize करा है इस वक्त, मैंने क्या recognize करा है? सबसे पहला स्टेप मैंने recognize क्या करवाया आप लोगों को? Emotion और the bias in your emotion. Listen, किसी ने तुम्हारी मर्जी से कोई चीज दी है, हक किया कि गलत किया? किसी ने, कोई भी है, बहन है, भाई है, माँ है, कोई क्लास फेलो है, कोई रूममेट है, आप लोग हॉस्टलाइज हो, किसी ने तुम्हारी कोई चीज तुम्हारी मर्जी को कर लिया, हक किया कि गलत किया? ठीक है. बायस क्या था कि आपने सोचा कि इसने इसलिए गलत किया क्योंकि ये बुरा है. पूछ के नहीं किया, इट्स नॉट अ बायस. बुरा पूछ के नहीं किया इज योर फैक्चुअल स्टेटमेंट. इसको रखो, इसको अपनी आर्ग्यूमेंट में बेसिकली क्या सिखानी है? बात करना सिखाना. जब आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो आपकी एज हो, चाहे वो छोटा हो, मैं आपको सिखा रही हूँ हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर बायस, योर इमोशन एंड हाउ यू आर गोइंग टू टॉक फैक्चुअली अबाउट इट. ठीक है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा लेकर हमारी यूथ को क्या दिया जाता है कि आप लोग क्या हो? बदतमीज, खूंखार, बदजबान और अपनी खुद सर और क्या छोटे हो. दिमाग से छोटे हो क्या? नहीं. दिल से छोटे हो क्या? नहीं. अपनी इबादत से छोटे हो क्या? नहीं. कहाँ से छोटे हो? सिर्फ उम्र में छोटे हो क्या? उम्र में छोटे हो ना? नो. ठीक है, यहाँ तक सबको कैसा फील हो रहा है? ग्रेट. सो आपने सबसे पहले सीखा कि आपने अपने बायस को, आपका बायस किसी के साथ क्या है, आपकी फैक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, आपके मुंह से क्या निकल रहा है. ओके, नॉट इन एन आइडियल वर्ल्ड बट इन एन एक्चुअल वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल आप इन द मीन्स ऑफ कुछ नहीं देखिए आप हंसना है कि आपको मेरे स्मार्ट मीटिंग में बैठो आप दिमाग, ठीक है, और आपके पीछे आपका नाम क्या है? Because you both are in my spine, okay? तो suppose it कि मैं तहरीम की बड़ी बहन, right? नहीं, मैं तहरीम की बहन, and तहरीम आपने मुझसे किसी चीज की इजाजत मांगी, वो चीज जो आपको पता है कि आपकी मदर ने इजाजत नहीं दी, अभी तो नहीं शादी करना कुछ मांगा, वो किस वक्त
शाबाश, पिज्जा कब भी ऑर्डर किया था, आज भी ऑर्डर किया, अगर मैं आज ऑर्डर करता हूँ, कल ऑर्डर किया था, तो आज वाले ऑर्डर का मसला हो जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे क्या होगा, मैं भी नॉर्मल नहीं है। तो घर में बनाना सीखो ना, बनाना सीखो ना घर में, ताकि कल को अपने घर तुमने जाना तो तुम अपने मियां को अपने बच्चों को खिला सकोगे। I mean, I'm not saying this is what your mother says, but as a mother, this is what I would think. Okay? Okay. आपके father के साथ और वादा के साथ, and I want an example of your father. वादा और वादा के साथ। मैं बस टाइम का मुझे पैसे हो सकते हैं, right? Both financial, but both examples में finance था। Both examples में finance। पैसे के बारे में क्या कहेंगे? तुमने मांगे और फिर तुमने दोबारा मांग लिए। कुछ खर्च किए फिर दोबारा मांगे। कुछ खर्च किए फिर दोबारा मांगे। अच्छा, सुनने में तुम लोग को क्या लग रहा है? बात गलत है कि सही है कि बस जनरल है? So everybody is starting from a very baseline. Everything is not acidic, it's just basic, right? Basic. हमने एक काम किया, उस काम को रिपीट करने की वजह से एक आर्गुमेंट हो सकती है। मुझे ये बताओ, how would you respond to this? क्यों किया? How would you respond to क्यों चाहिए? शाबाश, फैंटास्टिक बेटा, ये तो कभी भी नहीं चलेगा। बोल लो, लेकिन बोल लो फिर से आगे। दोस्तों के साथ बैठना नहीं, दोस्तों बाहर जाना किस लिए चाहिए? ओके, अगेन मोर क्यों क्यों वाला उर्दू वाला क्यों किया, क्या जवाब दूं? हर बार मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? शाबाश, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। ये हकीकत में संदाना जवाब था। ठीक है, चलो पढ़ेंगे। ओके, मज़ीद कोई और क्यों का क्या जवाब दोगे? शाबाश, वेरी गुड कंपैरिजन, एक्सीलेंट। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ना सिर्फ मैं चाह रही हूँ कि सारे पर्सपेक्टिव सामने आ जाए। ओके, एनीबॉडी एल्स? पहले आप कैसे दे दियो पर तो मैं मुझे बहुत चाहिए, मैंने दोस्तों के साथ बात करने जाना है। दोस्तों के साथ बैठ रोज ही दोस्तों के साथ चल रहा है, उनको घर बुला कर प्यार करना आसान है। पेरेंट्स हल देते हैं यूजुअली। हाँ, मैं भी सोचा से चाहिए कि एक्सेप्शनल केस हो सकता है, कुछ दोस्त बाहर गए तो अचानक ऐसा नहीं रहता चाहिए खाली। status कुछ बहुत जरूरी है, definitely. Okay, good. So when you are giving an answer to your क्यों, is it logical or illogical? जो सुनने वाला पेरेंट उसको क्या सुनाई देगा? illogical सुनाई। दोनों में से गलत कौन है? एक अपनी जरूरत से आता है, एक अपनी जरूरत से आता है, दोनों सही है। कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी ऐसे होगा, आपकी वर्क एनवायरनमेंट में भी ऐसे होगा, आपकी फैमिली लाइफ से ये शुरू होता है। मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, किसी के पास लोगों का पैसा नहीं है बातें बोलने के लिए, जिसके पास है शाबाश, एक्सीलेंट, ओके, बिकॉज़ ये सारी बातें ऐसे बोलते हैं। I don't know when ever will I be back here, मुझे नहीं पता, सभी बातें किसी को नहीं पता, लेकिन when you sit with somebody, when you sit with a teacher, always have some form of note taking. It's a good thing to do. Yes, not. अच्छा, पर ये नहीं करते तो मैं मान रही हूँ, वैसे बता रही हूँ कि ये नोट रखो, क्योंकि ये चीजें भूल जाती होती हैं। ओके, कल बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बुरी चीज है, अच्छी चीज है? कैसे? अम्मा तुम्हारी मान रही नहीं है तो पैसे देने के लिए, तो कह रहे हो कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज है। कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज है, हमेशा ये याद रखो। आप अगर किसी भी इंसान के साथ किसी भी रिश्ते में बंधे हुए हो, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो personal, you're always going to have conflict. Not you're going to create conflict, लेकिन two human beings with two human hearts, with two human minds, with two human personalities are bound to have conflict. लिख लो, conflict is not an issue. It is never an issue. जब ये कह दो ना तो बोलो, जरा एक दफा बोल के देखो, मैं सुनना चाहता हूँ फील क्या होगा। Conflict is never an issue. अब ये बोलो
conflict is never an issue. किसको लग रहा है कि झूठ बोल रहा हूँ? किसको लग रहा है कि झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ। लग रहा है कि झूठ बोल रहा हूँ। लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। मैं ये बहुत मुश्किल है। गंदी हो गया तो जजमेंट हो गया। बोल दिया तो मैंने कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट एन इशू। सब ने बोला तुम से किसको लगा कि बात सही है, किसको लगा कि बात सही वाले हाथ खाए। गुड, थैंक यू। गलत वाले बात है, ये कोई बात सही नहीं है, ये सही नहीं करती है। गुड, ट्रूथफुल पीपल, ठीक है ना? एग्री करना इज नॉट एन डिसएग्री करना मुश्किल होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट एन इशू। इट्स नॉट एन इशू दैट यू डिसएग्री। अभी मेरे पास टाइम नहीं है to take you through that why do you think conflict is not an issue. Usually क्या जवाब बस क्योंकि तुम दो लोगों से मैं तुम्हारा माइंडसेट पूछना चाहती हूँ क्यों लगता है कि conflict is not an issue shoot है तो उसके जो अगले fear mindset very good तुमने बिल्कुल सच्ची बात की तुम्हें पता है I coach women men couples day in and day out and the first thing they say is मुझे समझ नहीं आती आपकी बात कैसे समझाऊं इस वजह से मेरी शादी या मेरा रिश्ता मेरे बच्चे के साथ या मेरा रिश्ता मेरी माँ के साथ या बाप के साथ जो है नहीं क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाती क्योंकि मैं अगर बोलूंगी तो फिर वो बोलेंगे और फिर मैं बोलूंगी फिर वो बोलेंगे तो फिर हमारी लड़ाई है क्योंकि लड़ाई होगी तो फिर मसला तो खराब हो गया ना मैंने कहा तो मुझे तो बोले बोला ना कैसे आउटकम्स बुरे कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम्स बुरे होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के आउटकम्स बुरे होते हैं वो जवाब मैंने दे दिया है I just want you to think on this. Conflict के outcomes बुरे हैं, ये conflict को deal कैसे कर रहे हो outcomes बुरे हैं. अब वापस मेरी पहली वाली बात पे जाओ. Connected to what I started saying. When you are supposed to give a rational reason to a rational request in your mind to your adult, your parent, या to your brother and sister. या फिर मेरी अंग्रेजी समझ आ रही है सबको? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आएगी तो मुझे टोक देना मुझे मसला नहीं है बात समझना जरूरी है जब उनको ये राशनल रीजन दे रहे हो और मैंने कह दिया कि इमोशनली चार्ज हो तो जवाब दो और उनका जवाब सबसे अच्छा था आई लाइक योर जवाब आपका नाम क्या है मोहम्मद अल्लाह ने आपने पूछा आप मुझसे क्या लगे मैं कह रहा हूँ मान ले राइट कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल क्या हो जाएगी conflict should agree with it, right? In any scenario, if you are thinking that conflict is a problem, शक्ल अगली ही लगेगी. मैं यहाँ खड़े होकर कन्विंस करती रहूँ तुम लोगों को अगर तुम लोगों ने माइंड में रखा हुआ है कि बहस ही नहीं होनी चाहिए, तबादला ख्याल ही नहीं होना चाहिए, उनको खुद से मेरी बात समझ आ जानी चाहिए, उनको खुद से मुझ पे तरस आ जाना चाहिए, इसको खुद ही से पीछे हट जाना चाहिए, इसको खुद ही से सिला रखने के साथ कर देनी चाहिए, इनको खुद ही मुझे माफ कर देना चाहिए. कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी पे वही नाज़ नहीं होने वाली आपके लिए कुछ और ठीक है कोई नहीं आने वाला कोई नहीं तुम्हारा दिल बदलने वाला कोई नहीं तुम्हारे साथ जो है तुम्हें बैठा के किसी के पास नहीं कि तुम्हें बैठा के ना तुम्हें ये आओ मैं तुम्हें सुनता हूँ मैं तुम्हें समझता हूँ तो किसने करना आपने खुद करना इमोशनल रेजिलियंस का पॉइंट नंबर 1 है यू और योर ओन इमोशन स्टडी दिस you're going to be a father you're going to be a mother you're going to be a leader of your community पेरेंट्स लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी होते हैं पेरेंट्स के अलावा आप टीचर्स होते हैं मेंटर्स होते हैं जो कुछ भी होते हैं जिस भी करियर फील्ड में होते हैं आप सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अब और आपका राइट और रॉन्ग तकवा माइंडसेट है कहीं पे खड़े कहीं पे सिर्फ खड़े सिर्फ सलाम किया सामने वाले को समझ आ गई ठीक है चर्चा बता इसने सलाम किया इसकी आवाज में इसकी आंख में इज्जत फिर उसकी वजह से बात करनी शुरू की तो वो बात कम करता है बात सुनना चाहता है वो एक्नॉलेज करना चाहता है वो वैलिडेट करना चाहती है ये वो स्टेप्स हैं जो इमोशनल रेजिलियंस सिखाते हैं तुम लोग वो कर नहीं सकते जो तुम लोगों ने खुद सीखा है तुम लोग वो दे नहीं सकते जो तुम लोगों ने खुद अपने आप को नहीं दिया अपने आप के साथ तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की कॉन्फ्लिक्ट से डरो मत कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करते हैं इसको बात नहीं करोगे तो बात हल कैसे होगी और दबाते रहोगे बात को और बुरा सोचते रहोगे और बायस के साथ आते रहोगे तो होगा क्या जब बोलना
बोलने लगोगे तो मुझसे क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? बुरा निकलेगा, आवाज़ ही ऊंची हो जाएगी। अगर आपने ये कहता रह जाएगा आवाज़ नीची करो, आवाज़ नीची करो, आवाज़ नीची करो, आप जो बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, एंड क्या होगा? दफा हो जाएगी आंखों के सामने से वगैरह वगैरह। Okay. So what are you going to do is ruler एक acronym है. Number one, अपने ये emotional intelligence और emotional resilience की सुनने में आती है. Emotional resilience से इसके अलावा emotional intelligence से करते हैं. इसलिए मैंने सीखा और मुझे हाथ खड़ा करके मुझे आता है. पढ़ा तो नहीं. I know. हाँ पढ़ा ठीक. तो emotional intelligence का जो acronym है वो ये है. Ruler. R recognition of yourself. R is the recognition of yourself. Repeat करो. जिसके पास कॉपी पेंसिल नहीं है, नोटपैड पे नहीं लिखते, अपने फोन पे नहीं लिखते, बोलो. R recognition of yourself. उसका मतलब ये having the ability to recognize the emotion. मैं अगर चार्ज हो रही हूँ, मुझे अगर गुस्सा आ रहा है, मुझे अगर डर लग रहा है, मुझे अगर कोई जहर लग रहा है, मुझे बताना चाहिए कि ये जो मुझे फील हो रहा है, मुझे हो क्या रहा है, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे हो क्या रहा है, ठीक है? Of course, वो मैरिड नहीं होने शायद आज तुम लोगों की जिंदगी में शादियां होंगी, स्पाउसेस के साथ तुम लोगों की आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, which is very natural. खुदा रे वास्ते समझ oh my god मेरे शौक से नाराज हो गई, वीडियोस नाराज हो गई, तो बड़ी दुनिया खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं, बस साइंस नहीं करते होते इधर जाके ये क्या होगा? लड़ना सीखो प्यार मोहब्बत और इज्जत के साथ, ठीक है? याद रखना है. तो अगर जो है ना हमारी जब शुरू में लड़ाई होती थी तो it was always like उस बात में नहीं काम करता है, तो आगे शुरू बोल कैसे रही हूँ, and I do not recognize कि because of my bias, because of my emotional negativity या मेरा जो mindset था उसकी वजह से मैं logically बात नहीं कर रही, and women usually start crying and men usually start avoiding. ये बात सीखना जरूरी है. Men start avoiding, women start emotionally charging, crying, रोने लग जाती हैं. तुम रो क्यों रही हो? बता रही. तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे. तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझे बताना नहीं आ रहा. तो बताओ ना, लेकिन बता नहीं सकती. हो क्या रहा है? You get engulfed in the kind of emotion जो तुम्हारे लिए मुज़र है, तुम्हारे relationship के लिए. Does that make sense? Do you all realize? आप लोग के सबके parents, आप लोग अपने parents को ये देखो argument करते देखो. One is crying, one is shouting. One is quietly sitting, one is बोली जाएगी. You understand, right? ठीक है? होता ही नहीं होता. What is happening? Again, the cognitive distortion is bringing in. I gave another word. Come back. Recognize yourself. Number 2, understanding. Number 2 क्या है? पहले है अपना इमोशन recognize किया. मुझे गुस्सा आ रहा है. मुझे भूख की वजह से गुस्सा आ रहा है. मैं थकी हुई हूँ, गर्मी की वजह से मुझे गुस्सा लगा हुआ है. या मुझे मेरी दोस्त ने वो टेक्स्ट मैसेज किया है, मुझे उसका मैसेज अच्छा नहीं लगा, मैं इस वजह से चिड़चिड़ी हुई हूँ. या पता नहीं तुम लोग के दोस्त क्या करते हैं, सब क्या जाती है मुझे लिए वगैरह मैसेज नहीं मेरी टीम में शामिल नहीं किया. ओह हाँ, जो रिप्लाई होती है कसम I don't understand that. Like you understand. They could write you on. Okay, but it matters. It matters. इसमें मेरे वैसे मजाक की बात नहीं आती, but this has to do with personality. ये जो है ना कुछ चीजें अपनी जगह पे क्यों नहीं रखी या ऐसे क्यों किया या अगर कोई प्रॉमिस किया उसको फुलफिल नहीं किया. This has to do with character trait as well. This has to do with temperament as well. किसी का यार इतना हम एक दूसरे को हक नहीं देते, हम एक दूसरे की बात में ये सोचते नहीं कि इसका कोई मिजाज भी हो सकता है. ये ज्यादा मिजाज में सफाई पसंद है, ये ज्यादा मिजाज में वो है कहते हैं temperament. When you're more orderly, when you plan things, when you have a plan, right? Your friends जो कहते हैं बैठे बैठे चलो यार ये करने चलते हैं, and it sounds fun, and there are friends that नहीं यार ऐसे कैसे पहले इजाजत नहीं है, फिर देखेंगे, फिर कपड़े चूज करेंगे, फिर गाड़ी चूज करेंगे, फिर रोज करेंगे, तब तक आप पूरे हो जाएंगे. ठीक है? मैं वो वाला दोस्त हूँ
मुझे फोन आया तो मैंने 2 सेकंड नहीं सोचा, मैंने कर लेना, मैंने नहीं सोचा गुस्सा कितना है ये कैसे, एंड दैट्स अ फ्लॉ. इट्स नॉट लाइक समटाइम्स इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग एंड समटाइम्स इट्स अ वेरी गुड थिंग. मैं यस ना बोलती तो मैं नहीं करूंगी. सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. यू हैव टू रियलाइज कि लोगों के टेम्परामेंट्स होते हैं, लोगों की पर्सनालिटीज होती हैं, लोगों की उनकी लाइफ की स्टोरीज होती हैं. एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. माय फादर इज वेरी वेरी सिक. मैं कहाँ पर बस खाना का कुछ पाया गया एंड माय कजन, उनकी बायोप्सी हुई है, वो ऑब्जर्वेशन से अभी घर आई थी परसों रात की बात है. दिस इज इन कराची. एंड मेरी फादर को हार्ट चढ़ना शुरू हो गया. वन इज सेइंग शी इज fatigued, उनका बहुत, बिकॉज शी इज ऑन द फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर. एंड द अदर जो छोटी वाली मेरी कजन वो कह रही है कि fatigue की वजह से हो रहा है, और ये जो बड़ी थकी कह रही है इनको इन्फेक्शन हो गया, इनको इन्फेक्शन हो गया. मुझे वो तो कैसे कह रही हो इनको इन्फेक्शन हो गया? व्हाई डू यू कीप सेइंग दैट? She was under observation. The doctors told her she can go home. उनको आए हुए विचार कहते हुए हैं, तुम क्यों बार-बार ये बात कर रही हो? इन्फेक्शन हो गया, ना तुम्हारे पास एक्सरे, ना तुम्हारे पास रिपोर्ट, ना तुम खुद एक मेडिकल डॉक्टर हो. Why do you keep saying this? She had no answer to that. She had no answer to that. And then she gets quiet. आपको तो कभी ऐसा नहीं होता, तुम मुझे ये कहा था कि तुम हमेशा ये करना शुरू कर दो, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ये ऐसे हो जाएगी, तुम ये हो जाओगे, इसलिए मैंने कहा तुम ये ना करो. What is this? इसको क्या कहते हैं? Overwhelm कहते हैं, stress कहते हैं. आम जबान में overwhelm कहते हैं, stress कहते हैं, लेकिन इसको cognitive distortion कहते हैं. Slippery slope of thoughts, of negative thoughts. इसको catastrophization भी कहते हैं, इसको overgeneralization भी कहते हैं, right? उस कजन की मुझे पता चला कि वो catastrophize कर रही है. थोड़ी और देर बाद उसने कहा क्योंकि अब्बा भी ऐसे करते थे. And her father passed away when she was only 13 years old. And she has now, mashallah, she's 29 maybe. And she's lived this whole entire life without her father, and now her mother is extremely sick. तो ऐसे बंदे का माइंडसेट क्या होगा? क्या होगा? ओवरवेल्म होगा, distorted, very good catastrophizing होगा, डरा हुआ होगा. सिंपल सा में डरा भी होगा ना. मेरे वादा चले गए, मेरे वादा जा रहा है. सोचो ना सर, अपने आप को जगह पर रख के सोचो. तो वो किसी भी चीज का जवाब क्या बना रहे हैं, मतलब सब कुछ बुरा ही होने वाला है, क्योंकि उसने एक बुरे को होते हुए देखा है. Do you realize that? ये बात के एग्जांपल मैंने क्यों दी है? ऐसे लोग अपनी लाइफ में मिलते हैं. हमारे पेरेंट्स ऐसे. मैं तुम लोगों से, यूथ से, तुम लोगों की बात कर रहे हैं. तुम लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि तुम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम लोग अपने पेरेंट्स के साथ एम्पैथी और कंपैशन कैसे क्रिएट कर सकते हो. ये मेरा मकसद है आज यहाँ पर आने का. मैंने तुम्हें अपनी या अपनी कजन की बात इसलिए बताई है ताकि तुम लोग आइडेंटिफाई कर सको कि कोई कैसे सोच रहा है. अब इसी एग्जाम्पल को लो, और वही जो साइड लोगों ने एग्जाम्पल्स दी, खाने वाली, पैसों वाली, बाहर जाने वाली, या कोई भी जो तुमने अच्छा कुछ होती है रोजमर्रा की लड़ाइयाँ, कि पैसों वाली लड़ाई तो रोज की है, साइड नहीं है, तो खुद ही कमाने लग जाओगे, राइट? कुछ लड़ाइयाँ होती हैं फंडामेंटल, कभी नहीं चेंज हो सकती. वो उनका स्टैंस है, वो उनका स्टैंस रहेगा. शादी का मामला हो गया, करियर का मामला हो गया, कोई और मामला हो सकता है, राइट? तो सब ना हो सकता है, एनीथिंग. Some stances are fundamental. They're not going to change them. They're not open to even listening. What I want you to do is, again, I want you to recognize the emotion you have, and I want you to recognize the emotion they are having. You should know what क्या लगता है, parents को क्या emotion होगा. Very good. Is that a bad thing? Okay, good. Or and they're losing control. Losing control and overprotection, basically दोनों
क्यों नहीं तुम पढ़ रहे, क्यों ये खेल रहे हो, बंद कर दो इसको, खबरदार तुमने इसको तब तक हाथ लगाया जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा. What is Sam supposed to do? Sam, what will you do? वैसे what would you do? नो आइडिया. तुम्हारे साथ यानी ये हुआ ही नहीं कभी. साइम अच्छा बच्चा भाई, सब माशाल्लाह, इसने कभी ऐसा किया ही नहीं है. शाबाश, गुड जॉब. अच्छा, वरना वैसे आई गेस कर लूंगा जो बोल रहे हो वही कर लूंगा. जो बोल रहे हो कि वही कर लूँगा. इमोशंस क्या होंगे? रिजेंटमेंट. शाबाश. सुना सुना क्या क्या उसने, समझ आई है? रिजेंटमेंट. बात मानना with resentment will cause what? Frustration. Anger. How distance? How will it come out? जब इस तरह की दोबारा सिचुएशन होगी तो फिर वो दोबारा या किसी छोटे बहन भाई को जाते जाते बचा, किसी क्योंकि जुल्म है ना, जुल्म जो होता है वो अपने से बड़े वाले तो आप करते नहीं हो, ठीक है, अपने से छोटे वाले भी करते हो. बड़ी हद अपनी माँ पे कर लेते हो, सह लेती हैं, फिर बाद में कहते हैं तो मैंने बात करी, फिर बाद में खुद आगे कहते हैं फ्रूट खा लो, चाय पी लो, खाना खा लो, बड़ा बड़ा, राइट. that's a different यानी कि, but you are not supposed to even do that. That's not healthy. But coming back, unless until you learn the ruler rule, recognize, ठीक है, first recognize, then understand, then label, then express it, and then अपनी regulation कायम करो. What's going to happen is you're going to start building resentment. You're going to start building frustration. You're going to start building something जो ugly होगा और जो कहीं किसी गलत जगह पे, किसी गलत मुकाम पे, किसी बेचारे मिस्कीन के ऊपर निकलेगा, और फिर वो क्या है? जुल्म है. तक़वा वाले लोग जुल्म नहीं करते, अनजाने में हो जाए तो उसकी तौबा करते हैं, जानबूझ के जुल्म नहीं करते. मैम जरूरी नहीं है कि वो किसी और को ही निकले, हम जिम में जाकर निकाल सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं किसी को. That if you're going to channelize it, that means you're already doing the rule of law. You're recognizing it. लेकिन okay, वो बिल्कुल सही कह रहा है. You create an activity for yourself. You find a hobby for yourself. You channelize it. बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसे भी थॉट मत लीजिए. But when you come back to the same person and the same situation reoccurs, कितनी दफा चेंज होगी ये बात? साइज नहीं होता है. चैनलाइज करना बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए. आप किसी इमोशन में स्टक होकर बैठ नहीं सकते. दैट इज नॉट द सुन्नह ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यू नो दिस हदीस, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गुजर रहे थे किसी से, और यहाँ किसी जगह से कब्रिस्तान नहीं था बेसिकली, एंड देयर वाज दिस sahabiya and she was crying because she had lost her child. Yeah, हदीस याद है सबको. There was this sahabiya and she had lost her child. उन्होंने अपना बच्चा lose किया था. That baby died and she was crying, and Prophet sallallahu alaihi wasallam पास से गुजर रहे थे. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "It's sabr." And she did not look back, and she said, "When you will lose your child, you will realize what happens. I cannot do so," or something like that. She gave a very emotional response, and Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say anything to her. He just went by. वो चले गए. बाद में जो पीछे वाले लोग थे उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुमने किससे बात की और तुमने ऐसे कैसे किसी से बात कर ली है? And then she went back to Prophet sallallahu alaihi wasallam because she got so scared, and she went and she said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, I'm sorry. जैसे भी अपने अल्फाज में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिर्फ इतना से कहा, सब्र वो है जो पहली वार पे आप करते हो. सब्र वो है जो पहले वार पे आप करते हो. मुझे ना बहुत सालों तक ये बात ही नहीं समझ में आई. मुझे लगा था कि इसका मतलब है कि आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो, आपको बोलना भी नहीं चाहिए और आपको चुप रहना चाहिए. लेकिन जितना भी मैंने सीरा को सीखा, जितना मैंने कुरान को समझा, सब्र वो है जो आप पहले वार पे करते हो, उसको कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. उलमाए कराम ने इसको सिखाया हुआ है अपनी किताबों में. हम सीखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, हमें नहीं पता. कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, अगेन यू रिकॉग्नाइज व्हाट इज हैपनिंग टू यू, and when you build the power to resist the नफ्सी, जो आपका एक जो हमारा जो एक नफ्स का एक होता है ना कि बस मैं अपी कर दूं, बस ये अपी हो जाए. The cognitive flexibility
नहीं सर आप लोग नहीं, आप लोग तमाम बच्चे खड़े हो जाएं, ठीक है? ओके, मैंने क्या क्या सिखाया? मैंने देखा था सारे सुनने लगे। हाँ यार मेरे पास टाइम नहीं है, ऊंचा बोलो। सुनना अगले बंदे को अच्छे से, सुनना अगले बंदे को अच्छे से, इमोशनल रेजिलियंस के बारे में सिखाया। अब हाथ खड़ा करके आप बोलो। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट अच्छा होता है कि बुरा होता है? कॉन्फ्लिक्ट से डरना क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट से डरने का हमने हल क्या बताया, कैसे हम नहीं करेंगे उससे? अच्छे से, अच्छे तरीके से, अच्छे से डील करेंगे। रूल ऐड करेंगे। You will recognize the emotion of yourself and the other person. हर बंदा अपनी इमोशनल हिस्ट्री के साथ होता है, स्पेशली आपके बुजुर्ग, आपके बड़े, ठीक है, आपके बहन भाई, आपके छोटे बहन भाई, आपके एज फेलोज भी, आपके दोस्त भी, सबकी इमोशनल हिस्ट्री है, सबके बायसेस हैं, सब किसी वर्ल्ड व्यू से आ रहे हैं। जो मेरा वर्ल्ड व्यू है जरूरी नहीं कि तुम्हारा हो। Do you understand that? You have to give that empathy and compassion to people. People are allowed to have a different world view. सिर्फ इसलिए कि मैंने ABCDEF सीखा है और यही सीखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला 𝐭𝐻𝐼𝐭 से बात शुरू नहीं कर सकता। Does that make sense? समझ आई मेरी बात? Yes. किसी को इस बात पे जज करना कि जैसे मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, चूंकि ये वैसे सोच नहीं सकता या वैसे सोच नहीं रहा या मेरे बताने के बावजूद इसकी सोच वैसी नहीं हो रही जैसे मेरी है, तो ये सोच ही आपने क्या क्रिएट किया किसी और के लिए? आपने अभी किसी के लिए क्या क्रिएट किया है? आपने किसी के लिए एम्पैथी क्रिएट किया, ठीक है? आपने किसी की बात सुनने का हौसला क्रिएट किया है। आज आपने एक नई चीज क्रिएट की है। अंडरस्टैंड दैट। रिकॉग्नाइज योर इमोशंस। तुम्हारी बात हक है, तुम्हारे जज्बात हक है। मैं तुम लोगों को तुम्हारी बात, तुम्हारे जज्बात डिनाई नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सारी दुनिया, सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द तवाफ नहीं करते हैं। हमारा अलमिया ये है, मैं ठीक हूँ, मैंने सोचा है, मुझे लगा है, मेरी मर्जी है, मेरी चाहत है, मैंने डिसाइड कर लिया हुआ था, मेरा एक विजन था, यही होना चाहिए। Do you see? Did you see? I just kept revolving. This action is so that अगर मेरी बातें हो जाएं तो शायद ये एक्शन में आता है। Do you understand that? सिर्फ अल्लाह के गिर्द घूमना है। अगर हम ऐसे अपनी सोचों में अपने गिर्द घूम रहे हैं तो हम अपना ही तमाम कर रहे हैं, हम ये शिर्क है। Understand that? अपनी इबादत कर रहे हैं, खुद सरी में बढ़ रहे हैं। Do you understand how this is coming back again to taqwa mindset? तक़वा वाले लोगों का ईगो यहाँ नहीं, पैर के नीचे होता है। मैंने ये नहीं कहा कि कभी ऊपर नहीं जाएगा, पर मैंने ये कहा कि उनको खींचना आता है उसको। Do you understand? You're going to pull your ego down. That is taqwa. Having empathy and broad-mindedness, growth-mindedness to listen to somebody is taqwa. That is cognitive flexibility. Does that make sense? Yes. अब मैं तुम लोगों को 2 एक्सरसाइजेस सिखाने लगी। कॉपी पर फेंको नीचे, सेव कर रखो। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो, जब आपको लगता है कि आप किसी का गला ही दबाओगे, ठीक है, मत दबाना प्लीज, बहुत बड़ी बात है। किसी को मुक्का मारोगे, किसी की चीजें फेंक दोगे नीचे, हम के साथ जो जाते हैं करते हो, प्लीज वो मत करना। What you need to do is, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीका क्या है? वो साथ क्या करना चाहिए? एक करके बताओ। बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो और बैठे हो तो इट्स वेरी फनी। अच्छा सेकंड, वुज़ू कर लो, हाउस बिल्ला में शेख होने चाहिए, पानी पी लो। Okay, so we know those 5 steps, right? Okay. वो आप करने के लिए भी, अब मुझे शदीद गुस्सा आया हुआ, तो वैसे मुझे बड़ा अच्छे लग रहे हो तो माशाल्लाह, बहुत सारे जुमले मेरे जवाब दिए। आई थिंक यू नो योर फील, वेरी गुड जॉब। अच्छा, तो जब मुझे शदीद गुस्सा आया हुआ है तुम पर और मेरा दिल कर रहा है कि मतलब कि मैं ना तुम्हें बस जोड़ के रख दूँ, तो मेरे लिए पानी पीना आसान है कि मुश्किल? ऊपर से तुम ही मुझे कह दो अम्मा पानी पी लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नो 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 नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज नॉट हैपन। तुम सब इसलिए हासिल हो गए हो। मेरा बेटा जो है ना, 17 years old, जब मैं चीखना शुरू करती हूँ ना, दिस इज नाउ बी काम और चीखना शुरू करती हूँ।
मैं कहती हूँ मैं नहीं हूँ काम, मुझे काम होने के लिए कोई नहीं, मुझे तुम नहीं कहोगे काम होने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए से काम नहीं, मुझे चुप कर दो, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इरेशनल, बट मैं तुम लोगों को यही इस वक्त भी मैं तुम लोगों को अपनी वल्नरेबिलिटी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये कनेक्शन क्रिएट करना चाहती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज यू नो समथिंग यू आर एबल टू act upon it. You're a human being. You're flawed. I'm flawed. I'm extremely flawed. ये vulnerability तकवा mindset की है. ये vulnerability without ego mindset की है. समझो इस बात को. Please, कोई भी perfect नहीं होगा. किसी को अपनी जात को इधर मत रख दो कि फिर उसके साथ डील करना इतना मुश्किल हो जाए. Okay. So when you're extremely charged या जब तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे parents extremely charged हैं, तो खामोश हो जाओ. इसलिए नहीं कि तुम लोग कॉन्फ्लिक्ट से भाग रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम लोग ये समझ रहे हो कि वो इस वक्त इस मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं है. What you can do is, if you have that affectionate thing, you can hug your parent, or you can give them bosa on their head, या you can hold their hand and you can say, I'm here, I'm listening to you. It's okay. हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन I'm here for you. Because a lot of times, a lot of mothers and a lot of fathers have never been acknowledged. Never been acknowledged. Acknowledged का मतलब क्या होता है? उनको यही नहीं कहा गया कि मैं आपको सुन रहा हूँ या आपकी बात समझ रहा हूँ. क्योंकि जब वो बच्चे थे तो किसी ने जब सुनने सुनाने का अमल ही ना पता तो क्या सुना जा सकता? तुम लोग कर सकते हो. ठीक है, बजाय से ये आपसे बात नहीं करनी है और जाके तुम पीछे चले जाओ, इस तरह से मत करो. इंस्टेड ये करो कि अच्छा मैं तेरी बैठी हूँ, मैं आपकी थोड़ी बात सुनूँ. अब्बा अम्मा, I love you. You're so respectable to me. You have to say this. You have to. तब मौका होता है जब इंसान खौफ से या गुस्से से चीख चिल्ला रहा हो, या जब ये समझ रहा हो कि सामने वाला जो है वो मेरे हाथों से निकल गया, मुझे गीत समझ रहा. पेरेंट्स यूजुअली क्या कहते हैं? तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते. क्या कह रहे होते हैं? तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते. तुम लोग वो क्या कह रहे हैं? एक्चुअली इस जुमले के पीछे क्या बात है? नहीं, इस जुमले के पीछे ये बात है कि यार मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, तो मेरे लिए नहीं हूँ. मैंने अपनी जिंदगी इतने साल तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी काबिलियत के पीछे मैंने लगाई, अपनी खुशी से लगाई. मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई नोबेल प्राइज मिलने वाला है. मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए नहीं हो? That is the vulnerability behind this. कोई ये बात नहीं करता, कोई ये बात नहीं सिखाता, कोई ये बात नहीं करवाता. इसलिए मैंने लिखा नहीं बताता. No one taught me this. पर आप सीख रहे हो. आप लोग ये नहीं कह सकोगे. आपको सीखना जरूरी है, आपकी अपनी जनरेशन के लिए, जो आपके पेरेंट्स बन रहे हैं, तो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए. Is that clear? You have to say I love you in the most heated moments. You have to say I respect you. You have to say you mean a lot to me. करके देखो, जानबूझ के गुस्सा लगा के देखो, और फिर ये ट्राई करो. एक्चुअली उनको नुकसान हो, जानबूझ के, क्योंकि तुम्हारी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी काम करनी चाहिए. तुम लोग भी भागना चाह रहे हो. ये तो डरना नहीं है. जब पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो हम सबसे ज्यादा डरना शुरू हो जाते हैं. हम सबसे ज्यादा बैकअप. हम लोग कर क्या रहे होते हैं? वो गुस्सा कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम रिट्रीट कर रहे हैं, रिट्रैक्ट कर रहे हैं. मैं कह रही हूँ टेस्ट, इसको टेस्ट करके देख लो, तुम लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा. ब्रीदिंग एक्सरसाइज. जब तुम लोग अकेले होते हो, तुम लोग नर्वस हो रहे होते हो, एग्जाम्स होने वाले हैं या किसी टीचर के सामने, क्लास के सामने प्रेजेंटेशन होना है, तो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है 6, 7, 8. वो करवाने लगे तुम लोगों से. That basically calms you down and gives your cognitive flexibility more room to listen, understand and think clearly. इसको क्या कहते हैं? 6, 7, 8 breathing exercise. इसको YouTube पे भी देखना. Let's do it. Okay? करना क्या है कि जब मैं 6 बोलूँगी तो 6 की गिनती तक अपनी उंगलियों में 6 गिनना है और 6 की गिनती तक सांस अंदर खींचना है. ठीक है? ऐसे मैं बोलूँगी स्टार्ट, तो तुम लोग अपनी उंगलियों पे गिरोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 तक सांस अंदर खींचोगे. फिर मैं बोलूँगी स्टॉप, तो 7 तक स्टॉप रखना है अपना सांस. We are not going to breathe it out. Is that clear? And 7 तक. And then when I will say 8, you're going to exhale, but you're going to exhale from your middle diaphragm, from here, right? And it should be. किसी ने खड़े होकर क्या? समझ आइए? Do you understand? I know I look funny, but that is, हम जो निकाल वाले हैं तुम लोगों को इसको डर ही नहीं होना चाहिए. ठीक है? तो तुम लोगों को ये देखा, हम लोग डर के बैठ. Okay. Ready? हाँ. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Breathe in. 1, 2, 3,
4 5 6 pause 1 2 3 4 5 6 7 breathe out 1 2 3 4 ये जो तुमने हाथ खड़े किए ना this is not breathing हो गया दोबारा से स्टार्ट करना है ओके रेडी स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 pause 1 2 3 4 5 6 7 breathe out 1 2 3 4 5 6 तुम लोग का सांस खत्म हो जाएगा धीरे-धीरे खत्म होगी तब तक सांस फेंकने की कोशिश करते रहो इसलिए मैंने कहा from your middle lifetime because your body should feel empty your body should feel empty because what you're doing is you are breathing out the whole anxiety that is building inside of you इसका एक मकसद है scientifically research exercise है कोई नहीं सिखाता कि यार तुम लोग अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हो सारा कुछ दिमाग से नहीं होता तुम लोगों को पता है कि हमारा जो कॉग्निटिव माइंड है जो हमारा कॉग्निटिव माइंड है वो तब काम करता है जब हमारा एमिगडाला ये समझ रहा होता है कि हमारी फिजिकल बॉडी सेफ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब बच्चा पैदा होता है ना तो दिमाग में सिर्फ एक पोर्शन होता है ना कंप्लीटली फॉर्म होता है उसको कहते हैं एमिगडाला और एमिगडाला का काम क्या है वो ये बताना कि तुम्हें थ्रेट है इसलिए छोटे बच्चे भूख के टाइम पे रोते हैं डायपर के टाइम पे रोते हैं दर्द के टाइम पे रोते हैं वरना तो वो कैसे बताएंगे कि उनको कोई तकलीफ है राइट हमारा एमिगडाला इज द ओनली स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट टेल्स अस दैट वी आर अंडर थ्रेट that is charged every time we feel fear और अगर हम physically okay नहीं हैं तो हम cognitively brain wise emotional wise हम properly function नहीं कर सकते is that clear ये बात please याद रखना ये बायोलॉजी की किताबों में नहीं सिखाई जाती है और ये बहुत बाद में सिखाई जाती है जब तक हम आधे से ज़्यादा काम खराब कर चुके होते हैं तुम लोगों के पास आने का मकसद तुम लोगों से बात करने का मकसद इसलिए I do not want this youth to go unknowingly in life like that तुम लोगों को स्किल सिखाने का मकसद है कि तुम लोग अपनी जिंदगियों में और अपने लव्ड वंस की जिंदगियों में वो जुल्म वो ज़्यादतियां जाने अनजाने नहीं करोगे और अपने साथ वो ज़्यादतियां नहीं करोगे ताकि तुम लोग बेहतर तरीके से इस मुल्क के लिए अपने लिए अपनी कम्युनिटीज के लिए काम कर सको There is a reason for this class. This is not just like, oh वो आई हुई है, oh वो आना चाह रही थी, वो अच्छा आ गई, अच्छा वो हम थे हमारे जगह दिखा लिया, वो अच्छा फोटो ले लिया, वो अच्छा नहीं Wallah, this was not the I am dead tired. I have to go back to USA tomorrow or I have another lecture an hour away and I'm here because I know that this will matter on the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala पूछेंगे इन्होंने तुमने क्या किया हमें कहोगे यार मैंने किया जो मुझे मेरी इस्तिताअत में था वो मैंने किया तुम लोगों की इस्तिताअत में जो है जो हो सकता है मैं आज तुम लोगों को वो सिखा रही हूँ make this clear make a note of this great हम 3 दफा करेंगे प्लीज 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 सही से एक्सरसाइज कर लेना और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना तुम लोग अपने दोस्तों के साथ इसको अप्लाई करके देखना इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना तुम लोग खुद फील करोगे कि when you are in anxiety या when you are not able to sleep or when you are not able to think clearly if you close your बाथरूम में चले जाओ कहीं पे भी चले जाओ मसले में बैठ के कर लो लेकिन ये करो सही and it will help you ready yes shoulders behind eyes closed सारे लोग आंखें बंद करो सब आंखें बंद करो मैंने भी की है मैं भी किसी को नहीं देखती मैं किसी की गलती नहीं करूंगी ready start breathe in 1 2 3 4 5 6 stop 1 2 3 4 5 6 7 breathe out fully 1 2 3 4 5 6 7 8 good pause वापस आओ breathe in 1 2 3 4 5 6 7 pause 1 2 3 4 5 6 7 okay breathe out 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके अब मैं नहीं गिनूंगी खुद से करो स्टार्ट पॉज ब्रीथ आउट स्टार्ट पॉज ब्रीथ आउट बैठो 2 सेकंड का पॉज लो और सब मुझे अपने बॉडी में जो फीलिंग्स महसूस हो रही है वो बताओ and then we're done with the class who would want to share yes please talha pata hai mohabbat talha feeling emptiness in your internal system emptiness is it a good feeling or a bad feeling good and bad feeling pretty bad feeling okay kyunki it's different I feel pain you feel pain
ठीक है, 10 मिनट का रिकॉर्ड करना, अपनी सेहत का ख्याल रखो बच्चे। बट गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हमने स्पीड में थोड़ा रिलैक्स हो। हाँ, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा काम, थोड़ा पीसफुल, ओके। I think इस एक्सरसाइज से बाकी उससे भी कर सकते हैं। क्यों? जो आया ना, हमने महसूस किया था। मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, मेरे जो हंसे बहुत खुश हुए। अच्छा हाँ, रिलैक्स और स्ट्रेस कम हो, स्ट्रेस कम होगा। यानी कि बॉडी में तुम लोग कौन लोग यार, तुम लोग मैम ये जब पता थक जाता है ज़्यादा 20 मिनट के बाद मेरा माइंड बोर होने लगता है तो ना वापस आता है ना, गुड यस। रिफ्रेश एक उसने मतलब ये कम्युनिटी के लिए सजा नहीं किया, तुम लोग अपने हाँ फ्रेश भी कर रहे हो। नींद हो रही है। अच्छा तुम्हें पता है, तुमने कहा नींद उठी है, कुछ लोग कहते हैं नींद आ जाती है, हाँ कसम से, लेकिन यू नो मैं तुम लोग पता क्या दिखाना चाह रही हूँ कि इसका कोई एक सेट आउटकम नहीं होगा। Where you are at mentally and physically, that is what you will get. आप कुछ कह रहे थे? Yes. भूख लग रही है। भूख लग रही है। Good. So तुम लोगों ने देखा कि different people say different thing. आपकी body है, आप जो feel कर रहे हो वो होगा। But this will actually, आप लोगों ने क्या किया? Basically अभी आप लोगों ने किया क्या है? You pay attention to your body. You paid attention to your body. हम सारा दिन खोते की तरह लगे रहते हैं, हमने कभी अपनी बॉडी से पूछा बॉडी तुम ठीक हो कि नहीं हो? 2 गोलियां खाओ, चलो, ठीक है? So you have to pay attention to your body. If you pay attention to your body by such an exercise, what happens is your mind tells you what you need, or it's able to take you forward. So I don't know, I'm going to shut my line and astaghfirullah wa atubu ilayh. Assalamu alaikum sayyidina rasulullah wa sallam. Jazakallah khair everybody. मैम इस तरह के जो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा इशू मैंने फेस किया वो होता है स्टबर्ननेस, कि अगला बंदा आप उसकी सारी बात सुन भी लेते हो, अपनी बात सुन भी, लेकिन वो क्या है हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करता, तो वो चीज़ बहुत क्या है पेनफुल होती है, हर्टफुल होती है। तो उस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जब आपको ये लगे कि सामने वाला बहुत स्टबर्न है, तो ये ना देखो कि वो स्टबर्न है, ये देखो कि वो क्यों स्टबर्न है। What is his fear? What is her fear? Why is it that they are so adamant that they are not going to move from their stance? Usually हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी ये है, ये मेरे सर पे चढ़ के नाचेगा। मैंने एक दफ़ा इजाज़त दे दिया, मैंने इसकी बात मान ली, तो ये मुझे अब दूसरों के सामने नीचा दिखाएंगे, क्योंकि लेग पुलिंग करते हैं ना, दोस्तों एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। यार देखा मैंने कहा था ना तुझे पता ना, तुझे क्या कर रहे हो, तो उसको शर्मिंदा करने लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम किसी को एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, वैलिडेट करें। The reason, you have to know the why. Try to find out the why. उस टॉपिक से हट के वैसे उससे दूसरी कोई बात करो तो देखो क्या होता है। And you have to know your own why, कि मैं क्यों इस बात पे अड़ी हुई हूँ, मेरे लिए क्यों ज़रूरी है कि ये मेरी बात माने, क्या वजह है, what is the reason। इजाज़तों के अलावा भी बातें होती हैं बहुत सारी। Does that make sense? Thank you. So I'm done. Thank you so much, ma'am, for this amazing session. Now, I would like to call our respected director, Sir 𝐒𝐭𝐫𝐧𝐭 for concluding remarks. Ma'am, thank you so much for coming all the way from US and from Lahore. और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी इन्विटेशन को फ़ौरन एक्सेप्ट किया और आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। चूँकि टाइम कम है और आपका अगला सेशन भी है 4 बजे, हमारी एक और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है फ्री कुरान एजुकेशन, वहाँ पे मैम जा रही हैं। मैं जस्ट सिर्फ 2 बातें करूँगा। एक तो ये है कि जो अल-क़ादिर का विजन है, दैट इज़ टू सीक द गाइडेंस फ्राम द कुरान एंड सीरा, और देन टू यूज़ दैट फॉर तरबिया एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, और उसमें डेफिनेटली हमारी बेस भी तकवा है। सेकेंडली, जो आपने अपना विजन अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, दैट इज़ कि दूसरों की ज़िंदगियों का एक बेस्ट वर्जन उनको देना, तो हम इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि किसी की ज़िंदगी की कहानी चेंज करना। तो यहाँ पे रिमोट एरियाज से, डिफरेंट हम्बल बैकग्राउंड से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से अक्रॉस द पाकिस्तान हमारे पास बच्चे और बच्चियाँ हैं
यहाँ पे आपको कराची से सेंसई बच्चा मिलेगा, आपको लाहौर का बच्चा भी मिलेगा, आपको अटक का बच्चा भी मिलेगा, पूरे पाकिस्तान भर के बच्चे हैं, मियाँवाली का बच्चा भी मिलेगा। तो हम इनको यहाँ लाएं और हम इनकी कहानियाँ जो हैं उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद हमारा भी वही है कि इनको हम बेस्ट वर्जन जो है इनका प्रोड्यूस कर सकें। उसके लिए हमें आप जैसे लोगों का जो कॉपरेशन है, यहाँ पे आना है, जो नॉलेज कंट्रीब्यूशन है, दैट्स रियली अमेजिंग और बहुत अच्छा लगा। तो ये फर्स्ट एक स्टार्ट, इंशाल्लाह हम इस तरह के और सेशंस भी बुलाते रहेंगे आपको और आप किसी तरह से कंट्रीब्यूट करती रहेंगी। और एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आई वुड लाइक टू प्रेजेंट Al-Qadir souvenir to you. Although this is nothing but you have contributed to the Al-Qadir, but inshallah this is the start. Inshallah we will do the amazing thing. Please come here. Dale muchas gracias. Streaming चल रही है।